Hello friends, today we will start with linear inequations. This is one of the algebraic topics. You will like this topic. It's relatively more easy. And जिसको algebra अच्छा लगता है, they will like this topic more. Before we begin with this topic, first ये topic का नाम जो है वो समझ लेते हैं. Linear. Linear का मतलब है कि highest degree of your variable is 1. So when you have x raised to 1 plus 7, we can call this expression as linear expression. आगे लिखा है inequation. So if you have any inequality sign, say less than sign, say less than 8 लिखा है, then this completely can be called as linear inequation. ऐसे भी लिख सकते थे x plus 3 is greater than or equal to 8. इसको भी बोल सकते हैं लीनियर इनइक्वेशन. और एक पॉसिबिलिटी क्या था कि x प्लस ओके लेट मी टेक सेम नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू 8. तो इसको कैसे पढ़ोगे? लेस देन, इसको लेस देन और इक्वल टू. How is this read as? X plus 8 is greater than or equal to 8. And similarly, say I take same numbers, x plus 3 is greater than 8. So ये inequation word means any one of the four signs can appear. Linear means a degree of x will be 1. You will not get 2. You will not get any other degree except 1. Then a doubt can arise that can we have x plus y is say less than 1? Because here x degree and y both are variables and the degree of each is 1. This can also be called as a linear inequation, but we do not have to study such problems. We have to study in 10th ICSE problems having linear equation with one variable only. So variable will only be x or y or z or any variable, but it will be a single variable. There will be not more than one variable. Let us now understand some common terminologies that we may need. Natural numbers. Natural numbers are usually denoted by n and they begin with 1 and then 2, 3, 4, it goes on. Whole numbers are usually denoted by w and whole numbers begin with 0. Let us take next popular set of numbers. Integers are usually denoted by I or capital Z. Integers are ... so all negative numbers till negative infinity. Then let me write -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. It continues till positive infinity. Infinity means very large number. Here also it goes on till negative infinity. These are called integers. Let us take next set of numbers, real numbers. Real numbers are usually denoted by R. Real numbers क्या होते हैं? Real numbers is a set containing everyone, like it includes integers. एक बार integers बोल दिया तो it will include whole numbers and natural numbers. Then it will also include, real numbers will also include all rational numbers, मतलब सारे fractions 1/2, 3/5, etc. And it also includes all irrational numbers जैसे कि √2, √3, √5. So real numbers means the entire number line. Let us start with
our real part of the chapter. Let us consider a situation that you have x is less than 4. Now when x is said to be less than 4, and we further mention with you that x is belonging to, this is the symbol of belongs to, x belongs to natural numbers, then the understanding that we need to develop is that therefore x can be, let us make a curly bracket, let us list the elements which x can fulfill being less than 4. Natural numbers, as you know, begin with 1, 2, 3, 4, 5. So when you come across less than 4 and natural numbers are there, you have to list numbers 1, 2 and 3 only. Listing 4 is incorrect. And of course you will not list 5 or any other number, neither 0. Now the next question, so this answering is called a solution set. What we have written now is called solution set. The next question we can ask you is, put this on the number line. If we ask you to put this on the number line, we can mark numbers. Say we begin with 0, we write 1, 2, 3, 4, -1. Even if natural number was said, we can make a number line having negative numbers, 0, positive numbers. We know our answer is 1, 2, 3. So this answer is marked by highlighting those points. Highlighting means you can darken them more relatively to 0, -1 and 4. So you can highlight them. They should be looking more dark. This is the answer for the number line. So in our question, after obtaining this answer, as I said in the beginning, it's an algebraic topic. After you complete solving, you may reach to this step. For example, then x natural number है, आपने 1, 2, 3 identify किया, that will be called solution set. And examiner will ask you, put this on the number line. So you can make a number line, and there is no need to mention here that this is infinity, this is minus infinity. Infinity means a very big number. We don't have to express anything like that. Just this way is fine. Let us take one more example. Say we have x greater than or equal to 5 1/3 comma x belongs to whole numbers. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. नाउ होल नंबर्स का आइडिया तो हमें है. क्या है होल नंबर्स का आइडिया? दैट it starts with 0. So let us say we write 0. Okay, देखो आपको पहले से आइडिया है कि 5 1/3 से ज़्यादा बड़ा चाहिए. तो एक काम करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, and you want an answer greater than 5 1/3. So it's advisable कि आप पहले ही प्लान करके लाइन बनाओ. अच्छा, किसी को डाउट है कि ये लाइन पे स्पेस यूनिफॉर्म रखनी है, वो रख सकते हो ना, बाई चूजिंग 1 centimeter. If you feel your numbers are not going to fit properly, then you could have started with 2 3 4, that way also. You have to fit your main answer, that is what our objective is. So let me use another color. You want x greater than equal to 5 1/3, but you want x is belonging to whole numbers. Belongs to symbol है ये. whole numbers कहाँ से शुरू होता है? 0 से. लेकिन आपको तो 5 1/3 से भी बड़ा चाहिए. Now first of all identify where 5 1/3 is. It could be somewhere here, a little after 5. But we can't mark this number as we are interested in whole numbers.
So our next whole number after 5 1 upon 3, as you want greater than or equal to, will be 6. Then the next number will be 7, 8, and then 9 will come, 10 will come, 11 will come, and so on. Now mentioning so many numbers, infinite numbers, will not be possible. In such cases, we can make few dots above the number line indicating that this answer goes on till infinity. So it is understandable now that after mentioning these three answers, and if you have written these few dots at the top above the number line after 8, you can leave little gap and then mention, then it is enough to explain that this answer is taking care of till infinity. Many are thinking, if the question was x greater than 5 1 upon 3, then what would have happened? मतलब इक्वालिटी नहीं है तो भी ये केस में तो आंसर यही रहेगा, क्योंकि आपका आंसर तो होल नंबर से एसोसिएटेड है. तो 5 1 अपॉन 3 इक्वालिटी इंक्लूडेड हो या ना हो, वो खुद होल नंबर नहीं होने के वजह से आवर आंसर वुड हैव ऑलवेज स्टार्टेड विद 6. सो आंसर वुड हैव रिमेन्ड सेम फॉर ईदर ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस केस. Let us take a next example. Say we take x. This time we will take integers लेते हैं, ठीक है. इस बार क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनाते हैं. सपोज ऐसा बोला है कि x is less than 3 but x is greater than or equal to -3. ठीक है. आगे लिखा है x belongs to I. आई मतलब इंटीजर्स. ये हमें ग्राफिकली बताना है, मतलब नंबर लाइन पे बताना है. अब आप लोग सोच रहे हो ये कहाँ से आया, तो दिस वी हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हम लोग कुछ तो सॉल्व करेंगे एंड ये हमारा आंसर आएगा. लेकिन ये आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है अंदर नंबर लाइन, वही सीखना है. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल, डोंट ड्रॉ फ्रीली, नहीं तो मेरे जैसा लाइन बनेगा. You can make a better line with a scale, and let's mark some numbers. Now this time you have to take care of these numbers -3 to 3. So थोड़ा सा प्लानिंग करके बनाते हैं. ये 0, ये 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4, and so on. If you write 5, 6, if you have space, it's okay. Now the meaning of this is that x is lying between -3 and 3. But the condition is that x is an integer. So between -3 and 3, students can observe on the number line, the points of our interest would be, definitely -2, -1, 0, 1 and 2. इतना तो पक्का है, तो इनको हाईलाइट करना पड़ेगा. बट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना. इसको कैसे पढ़ते हो, x इज, कैसे पढ़ सकते हो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये x का कंडीशन है. x तो ग्रेटर वाले तो मार्क कर दिए, लेकिन यहाँ और लिखा है, मतलब वो भी चलेगा. इक्वल टू -3 भी चलेगा. दैट्स वाई -3 पे भी आपका पॉइंट डार्क होना चाहिए. ठीक है, मैंने खाली कलर चेंज किया, आपको डार्क बनाना है बस. पॉइंट्स को थोड़े डार्क होने चाहिए, ज़्यादा डार्क होने चाहिए रादर विथ 3, 4 के सामने या -4 से. ठीक है. अच्छा, कैन यू गेस, विल 3 बी हाईलाइटेड? नो, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे खाली x लेस दैन 3 है. तो लेस दैन 3 है तो इक्वल टू थोड़ी लिखा है कहीं, इक्वल टू साइन नहीं है. अगर होता तो आप 3 को भी मार्क करते. तो दिस इज योर आंसर फॉर द number line part of x is between -3 and 3. Let us take up one more example in this. Let us take up one more example. Say we write
माइनस 4 8/11 आया इज लेस दैन x इज लेस दैन और इक्वल टू 2 1/4. फिर से वही कंडीशन लेते हैं, x बिलोंग्स टू से z लिख दिया, z मतलब इंटीजर्स. So as usual we'll make a straight line you can make with a scale. ये बन गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन, अज्यूम कर लो ये एक स्ट्रेट लाइन. अभी हमारा इंटरेस्ट क्या है, -4 8/11 से बड़ा होना चाहिए x एंड 2 1/4 से लेस दैन और इक्वल टू चलेगा. क्लियरली आपको एक थोड़ा आइडिया तो है कि मुझे कैसे नंबर लाइन बनाना है. लेट अस से वी बिगिन विद से -6 -5 -4 -3. अब -5 से भी शुरू कर सकते थे. -2 -1 0 1 2 3 4 5 बहुत हो जाएगा इतना. नाउ यू वांट x to be larger than -4 8/11. First let's get a rough idea where -4 8/11 will be. So this is a mixed fraction, okay, this is not 4 into 8, it is 4 8/11. So to get a rough idea where this point will be, this point will be between -4 and -5. यहाँ पे कहीं पे शायद आपका पॉइंट होगा -4 8/11. 8 is very close to 11, that's why we have made this point for explaining a little farther away from -4. ठीक है, that's fine. So roughly we have got some idea that this is the position of -4 8/11. But your interest being only in integers, and that too you want x to be larger than that. Once you know it is larger than this is your interest, your focus will be on the right hand side numbers. So larger चाहिए तो your focus should be on this side. अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है. तो इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है. तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं. हाईलाइट मतलब बोल्ड बनाते हैं, थोड़ा डार्क बनाओगे इसको. डोंट मेक दिस पॉइंट डार्क. दिस पॉइंट इज नीदर इक्वल टू, और अगर इक्वल टू होता तो भी ये डार्क नहीं होता बिकॉज आपको सिर्फ इंटीजर्स में इंटरेस्ट है. -4 8/11 इज नॉट एन इंटीजर. फिर -4 आया, फिर क्या लोगे, फिर तो लाइन में चलना है. -3 -2 कहाँ तक चलना है वो भी देख लेते हैं. 2 1/4. So 2 1/4 will be a little after 2 1/4 between 2 and 3. तो उससे आपको कम चाहिए. एंड ये इक्वल टू भी चलेगा, मतलब इवन दिस कैन बी इंक्लूडेड, बट बिकॉज इंटीजर्स है, ये खुद इंटीजर ही नहीं है, तो इसके प्रीसीडिंग, इसके पहले इंटीजर कौन है, 2 है. तो नाउ यू नो आपको कहाँ तक हाईलाइट करना है. -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, एंड ये 2 भी आ गया. इसको हाईलाइट नहीं करना, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ दो उसको. जस्ट हाईलाइट दीज पॉइंट्स 2 1 0 -1 -2 -3 -1. अच्छा, अगर आपको बोला है कि भाई इसको सोल्यूशन सेट में लिख के दिखाओ, तो ये तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखोगे इसको. अगर बोला है सोल्यूशन सेट लिखो, सेट मतलब एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, इक्वल टू लिख दो, एंड देन राइट ऑल द आंसर्स दैट यू हैव हाईलाइटेड, विच इज -4 -3 -2 -1 0 1 and 2. Put commas in between, and order was not important. Like आप 0 पहले लिख सकते हो, -4 बाद में लिख सकते हो, बट हमने अभी ऑर्डर में लिखा. उसी तरह यहाँ पे भी अगर सोल्यूशन सेट बनाना है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे भी सोल्यूशन सेट. तो सोल्यूशन सेट इन दिस केस विल बी -3 -2 -1 0 1 2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज. और अगर यहाँ पे बोला होता तो सोल्यूशन सेट बनाओ, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट आएगा
एक कर्ली ब्रैकेट 6 7 8 और फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब समझ जाएगा कि नेक्स्ट नंबर 9 है 10 है 11 है टिल इन्फिनिटी. डोंट राइट इन्फिनिटी हियर, डो नॉट मेंशन एनीथिंग, जस्ट पुट फ्यू डॉट्स एंड क्लोज द ब्रैकेट. राइट, ठीक है. लेट अस टेक, तो अभी तक हमने कौन से ले लिए, नेचुरल नंबर सीखा है, होल नंबर के एग्जाम्पल लिए हैं, फिर इंटीजर का लिया. अभी एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज हमने कुछ सॉल्व किया और हमें आंसर आया x is लेस देन 2 3/5. आगे लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. ये दिया होगा क्वेश्चन पेपर में. नाउ व्हेन इट इज सेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, एंड यहाँ लेस देन, तो पहले तो एक नंबर लाइन हमने बना दी. ये आई थिंक आज की सबसे ज़्यादा स्ट्रेट लाइन यही है. तो हमें चाहिए वो रीजन ऑफ x जो 2 3/5 से थोड़ा सा थोड़ा सा पीछे की तरफ है. तो पहले तो एक आइडिया ले लेते हैं. ये बना दिया हम लोग ने 0 1 2 3 4, ये -1 है, -2 ले लिया, -3 -4. ठीक है, थोड़े नंबर्स ले लो, ऐसा नहीं है कि -5 तक ही लेना है, -4 तक -3 तक भी चलेगा. नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज योर इंटरेस्ट. 2 3/5. नाउ 2 3/5 का मीनिंग है, 2 3/5 का मीनिंग है कि अगर ये 2 to 3 के बीच का रीजन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 4 डॉट्स बनाओगे, 4 पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड करोगे तो आपको 5 पार्ट्स बनेंगे. 5 लिखा ना यहाँ. अब ऊपर 3 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है कि आपको थर्ड पार्ट तक जाना है. तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ योर थर्ड पार्ट. तो ये रहा. तो ये जो नंबर है इसको आप ऐसा एक एरो बना के लिख सकते हो, 2 3/5. तो अभी कोई बच्चे सोच रहे सर ये हर बार ऐसे करना है, 5 पार्ट बनाना है. वैसे चल जाता है, लाइक अगर आप इतना डिटेल में नहीं करो, बट थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 3/5 क्या है. नहीं तो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, एकदम ही पास में ले लेगा 2 के, वो तो क्लियरली थोड़ा सा गलत दिखेगा. तो 2 3/5 का मतलब है 2 को तो छोड़ो, 2 के बाद की बात हो रही है. 3/5 मीन्स अगर 2 और 3 के बीच में, 2 के बाद 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट्स में डिवाइड किया बाई मार्किंग 4 लाइन्स, 1 2 3 4, तो 5 पार्ट्स बन जाता है. थर्ड पार्ट तक जाना है, तो ये 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, थर्ड, तो ये थर्ड पार्ट को हाईलाइट किया और यहाँ एक एरो बनाया 2 3/5. हाईलाइट बहुत ज़्यादा मत कर देना. अब आपको कहाँ इंटरेस्ट है, लेस देन 2 3/5. लेस देन 2/3 2 3/5 तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, तो आपका इंटरेस्ट है इस तरफ. लेकिन क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो इस बार पुराने प्रॉब्लम्स की तरह आप सिर्फ 2 1 0 -1 पे हाईलाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर्स मतलब all the infinite points which are there, which are less than 2 3/5 in this case. When I say infinite points, every point on the number line is to be counted, included. So just to make you understand, I am changing the color. You will begin from 2 3/5 and continue using your scale and highlight this region, so I'm just trying to redraw it. Highlight means you can move your pencil over this region 2-3 times and make it dark. It should be distinguishable with respect to the right hand side. You can see here x is less than 2/3. It's advisable that you make a bubble over this. Bubble indicates that 2 3/5 is not to be included, so this region is made
like a small bubble. I'll try to highlight it here. I've made a bigger thing indicating that in this blue shaded region, in exam you don't have to use any color pencil, you have to use your own regular pencil. खाली इसको डार्क करना और यहाँ पे एक बबल बनाना है. बबल मतलब एक सर्कल टाइप, स्मॉल ओपन सर्कल. ओपन मीन्स नॉट इंक्लूडेड, ऐसे भी बोल सकते हैं. इसके लिए ओपन सर्कल बोला. एक और एग्जांपल लेते हैं. Say we have -3 1/2 is less than equal to x is less than 1/3 comma x belongs to real numbers. Say this is your question. Now to plot this on the number line, say we make, सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट है. ओके चलो, थैंकफुली दिस इज लुकिंग गुड. ये है x इज बिटवीन -3.5 to 1/3. नाउ लेट्स मेक सम पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट. से 0 1 2 3 बहुत हो गया इस तरफ, -1 -2 -3 एंड से -4 है. एक और ले लेते हैं -5. नाउ वी वांट -3.5. -3.5 will be between -3 and 4, and half means it's the midpoint. So this is your region. Just make a faint marking that this is the point of your interest. 1/3. 1/3 will be between 1 and 2. If you want, this is an optional thing, you can divide this into 3 equal parts by making 2 points equally spaced, and then one part chahiye. So this is the first part. So this is again your region of interest or point of interest. You want now x to be between them, and because real number bola hai, be sure that you have to make a darker line. Let me use the same color as you will be also using the pencil and not any coloring pencil. So ये हो गया आपका डार्कर लाइन. ठीक है. अब यहाँ पे equal to लिखा है, so x is to be greater than or equal to -3.5. So this region is included. Make a solid point, a filled point here, but x is less than 1/3. So this 1/3 is to be not included. So we are making an open circle or an empty circle, not a filled circle, an empty circle like this. Because these points are not clearly visible like 1 2, so it's advisable that we write here 1/3, and you mention here with an arrow here as -3.5. This looks fine. So all the points between them are included. Now some books also allow you to express this same thing like this. I'll try showing this. Whichever you like, you can use an exam. 0 1 2. Okay, I'll not make many points. -2 -3 -4. Let's continue. ये है आपका point 1 1/3, and which was this? This was -3.5. You can make a straight vertical line up, approximately 1 centimeter or little less than that will do. No dimensions are specified, just make a straight line up, and from this same point make a straight line up again, and you can connect these two. You can make a bubble or say empty circle here, and make a filled circle here, and shade this region, indicating that we have uplifted the line is that region that we are interested in.
तो हम ऐसे समझ सकते हैं, एग्जामिनर को ऐसे समझा रहे कि भाई इसको अभी ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस बता रहे कि हमारे ओरिजिनल लाइन में से हमने ये रीजन को ऊपर समझाया है कि ये है हमारा रीजन, ये शेडेड रीजन आपको तो ऐसे ही बस बताया है, आप खाली बस इसको थोड़ा ऊपर कर दो एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन. This is also one of the way in which you can show your answer. There is also one more way which some students use. Even that's okay. I'll just show you all the ways. चलो 1-2 मिनट के लिए assume करो यही straight line है. Say -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2. ठीक है. And ये रहा आपका वो point 1/3. And this is your point -3.5. And because this point is not included, you can make a little curvish and arcish type of line, not a straight vertical line, but this point needed to be included, so this is continued with a straight line. And now you can join with pencil scale this, and you can highlight this. This way is also fine. So this arcish look indicates that this point is not included, and with respect to that, when you make a straighter line here above -3.5, that region is included. So ये रियल नंबर्स में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये रियल नंबर्स में आपको ऑप्शंस मिल रहा है. Whichever way you are comfortable, you can do that. The first is fine, but the only thing is that ये जो darker region है वो कभी कभी student बनाता है, but then वो इतना dark नहीं बनाता है with respect to the other part, तो कभी कभी confusion हो जाता है कि what is the right one. That's why the second or the third option. Fine. एक लास्ट पॉइंट कर लेते हैं and then we will start with problems. Let's take one more last point. There is a terminology called as replacement set. We'll take an example. Say we take up an example. Consider x is less than 4, and say I give you a replacement set, and we write here in the replacement set 1, 2, 3, 4, 5, 6, say till 10 लिख दिया, 9 and 10, and we are asking you what is the solution set. What is the solution set? So replacement set is like this is your universal set. There is nothing other than whatever is written here. So if replacement set is given in the exam and you get this type of an answer, then the solution set to be taken is x is less than 4, but with these numbers only. So your solution set will be 1, 2, 3. Okay, let me take one more example to make you understand. 4 तो नहीं आएगा क्योंकि equal to नहीं है यहाँ पे. Equal to होता तो 4 भी लिखना पड़ता. Less than equal to नहीं है. Okay, let me take one more example. Say I take -5 and 10. So if the replacement set is -5, 10, and for the question x less than 4, then your solution set will be, अब खाली इसी में से आपको लेना है x less than 4 कुछ है क्या है, -5. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज योर रिप्लेसमेंट सेट इज से -3, 0, 1, 3, 4 and 5. Then your solution set will be less than 4 क्या क्या है, -3, 0, 1 and 3. 4 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है. या एक और ले लेते हैं लास्ट, एक और एग्जांपल. से वी हैव 4, 6, 8 and 10, एंड क्वेश्चन, ये रिप्लेसमेंट सेट दिया है क्वेश्चन पेपर में, एंड आपको आंसर आ रहा है x less than 4.
तो बस इसी में से आपको चूज़ करना पड़ेगा 4, 6, 8, 10, तो उसमें से तो कोई भी फिट नहीं हो रहा है. देन योर आंसर विल बी अ कर्ली ब्रैकेट and you will write nothing inside. This is called a null set because no element is fitting of x being less than 4 within 4, 6, 8, 10. Or if you don't wish to write this way, you can even express this as an empty set like this, and just make a vertical line over a circle. But this is wrong. Writing this way for empty set or null set is wrong, because this time there is one element inside. This is read as phi. This is a Greek symbol, just like आप अल्फा बीटा गामा पढ़ते हो, इसको फाई पढ़ते हैं. बट वैसे अभी ये सब नहीं पढ़ना है हमें, इसको भूल जाते हैं. You have to only treat this as empty set, either a curly bracket and nothing inside, or a phi, but not like this. ठीक है. Let's start with some problems.